in what was a major labor action in leading car manufacturer Maruti Suzuki's production plant in Manesar, close to Gurgaon and the national capital, workers went on a 13-day long strike. The action finally came to an end after a settlement with the management, brokered by the Haryana state government, the main highlights being, even though the management promised not to take vindictive action, it imposed a penalty equaling twice the wages for the strike period, effectively 26 days, for permanent workers who participated in the strike. Contract workers and apprentices were penalized salary deduction equivalent to 13 days. This marked a major concession from the management, which had earlier threatened that salary deduction would be done for the equivalent of 8 working days for every day. 11 workers who were sacked on June 6th for mobilizing workers have been reinstated. The company will conduct an on-job inquiry. No punitive or vindictive action will be taken against the striking workers. The workers claim this to be a landmark achievement in the struggle to form their own union, independent of what the workers claim to be a co-opted union of the management. Trade union representatives have claimed that considering this was an industrial belt which was notorious for brutal crackdowns over labor action, the Manesar workers' prolonged strike and the achieved settlement denoted a major success. The unrest began when the workers of the Manesar plant demanded a separate and independent union, alleging that the existing recognized union was dominated by co-opted workers, predominantly from the Gurgaon plant of Maruti Suzuki. They filed an application with the Labour Department of Haryana for registration of the newly organized Maruti Suzuki Employees Union. Taking serious note of the move, the management tried to muscle its way to claim the support of workers of its sponsored union by the name of Maruti Udyog Kamgar Union, or MUKU. This ignited the 13-day strike when the workers went on a tool-down mode of protest. शुरुआत में ऐसा था मैडम, मैनेजमेंट अपनी ज़बरदस्ती कर रही थी, मैनेजमेंट अपनी यूनियन को चाहती थी। स्टार्टिंग तो वहाँ से हुई थी कि उस टाइम पे जब लड़कों से ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवा रहे थे ब्लैंक पेपर के ऊपर भी, और बिना बताए कुछ ज़बरदस्ती कर रहे थे, भाई यहाँ पे सिग्नेचर करो नहीं तो निकाल दिया जाएगा आपको। तो कुछ लड़कों ने तो कर दिया, फिर धीरे धीरे पता चला तो लड़कों ने इसका विरोध किया और जैसे ऐसे ये धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया। The struggle saw many phases. The government declared the strike illegal on June 10th and imposed prohibitory orders in the plant. However, having received a lot of flack for its handling and crackdown on the striking Honda factory workers in 2005, the government was willing to play it safe, with its role largely restricted to issuing orders. प्रशासन ने आपको नोटिस भेजा है कि डीएलसी ने कि आप अगर मानते हैं तो ठीक है, वरना आपको मान लो प्रशासन के द्वारा उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। हम अनुशासन में बैठे हैं फिर भी हमें उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। और उस लेटर पे पता है डेट इशू कब की थी? 27/4/2011, जबकि हमने स्ट्राइक की थी 4/6/2011, यानी 1 महीने पहले प्लानिंग हो जाती है कि ये 1 महीने बाद हड़ताल करेंगे और 1 महीने पहले लेटर इनके पास आ जाता है कि हम उखाड़ फेंकें। ये जो सन 2000 से चाहे पशुपति मिल में हो, 2000 में मारुति के प्लांट नंबर 1 में हो, 2005 में होंडा का हो, 2009 में रिको का हो और 2011 में ये है, ये सरकार के विशेषकर जो लेबर डिपार्टमेंट और पूरा जो प्रशासन है, ये खुलेआम जो खासकर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के सीधे जो उनकी दलाली करते हैं, उनको बिल्कुल छूट देते हैं कि आपको श्रम कानूनों का बिल्कुल अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर वर्कर आवाज़ उठाता है तो उसमें पुलिस और ये प्रशासन सारा उनके पीछे जेल में डाल देता है। अब जैसे मानेसर प्लांट में इन्होंने ये झंडा लगाया मुक्कू यूनियन के नाम से, इसमें किसी वर्कर की कोई सहमति नहीं थी, 11 साल से वोटिंग नहीं थी। एक बाद में पेपर जैसे झंडा लगाया तो सिर्फ 2 लड्डू खिला दिए थे, ये आपकी यूनियन है। और ना हमसे किसी मतलब चुनाव में पूछा गया कि आपको ये प्रतिनिधि चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे 10 CLPL ऐसा जो दिया जाता है, जो गवर्नमेंट देता है, तो उसमें एक छुट्टी करने पे हमारे 1500 रुपये काट लेते हैं।
अब मैं ये पूछूंगा ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें 1500 रुपये एक छुट्टी पे काट लिए जाते हैं, अगर हम 5 छुट्टी करते हैं तो उसमें हमारे 9000 रुपये काट दिए जाते हैं। कोई भी हमारा प्रस्ताव हो, कोई भी हमारी मांगे हो, वो कभी भी ये जो कंपनी की पॉकेट यूनियन है कभी नहीं मानती, उस पर कोई बात नहीं करती। उससे कोई बात करते हैं तो ऊपर से HR से हमारा जो मुखिया डिपार्टमेंट है उससे पनिशमेंट उल्टा मिलता है हमारा। अब मेन कारण ये है, अब जैसे अगर कंपनी में सुपरवाइजर लेवल है, अगर वो एक वर्कर पे थप्पड़ मारता है, वर्कर को टच करता है तो उसको एक वाइट कैप दे दी जाती है। यानी अगर वर्कर को पीटोगे तो वाइट कैप मिलेगी, वर्कर को दबाओगे, अगर वर्कर बदले में कुछ उसको बोल देता है तो उसको टर्मिनेट या उसको वार्निंग लेटर इशू कर दिया जाता है। The next stage was a series of failed talks in which the Maruti management kept taking a hard line. We have got stuck. वो है मेन बात कि वो एक सेपरेट यूनियन की बात कर रहे हैं जो हम लोग को एक्सेप्ट नो जो निकाले गए हैं वो निकाले गए हैं। नथिंग, नहीं नोबडी हैज बीन रीइंस्टेटेड। दिस इज ऑल आपको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो 11 लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन है, इट स्टैंड्स एज इट इज। And this is because of the sort of encouragement given by the government of the day. They have say for investment sake, most of the investors feel, so that it is multinational or domestic, that they will have 2 concessions from the government. No tax, no union. Basically these are the issues. Now here, all of these workers, these permanent workers, some of the contract workers, they are all educated people. They wanted to form a union of their own. This is a basic right, a constitutional right. And that Johnny, who is supposed that chairman, the Subodh Bhargava, he is talking there should not be any political union. Who the hell are you to decide whether a union is political or apolitical, and who has given him the power to decide that? They form FICCI, they form CII, they form ASSOCHAM, and their fellows are now as MPs, industrialists are MPs, MLAs, and even FICCI's General Secretary is a minister. So they can jolly well do politics and take all concessions from this corporate captive government, and they now want to dictate terms. Union should be his choice, what type of union has to be formed. This Subodh Bhargava will tell. He does not know what is the background of Indian trade union movement. Even Nehru, Subhash Bose, they were in the trade union movement. So in Haryana, because of that movement earlier, this organization is, they are getting organized, and it's a very good sign for the trade union movement in this country. All the trade unions are united. It's not that someone AITUC is fighting, it is AITUC's case. It is not a case for CI2. It's not a case for INTUC. This is more or less an independent union. Meanwhile, the workers garnered support from labourers working in the other units in the Manesar-Gurgaon belt. Many organizations outside the ambit of this area also showed up in solidarity. मैं रहता हूँ बादली, राजा बिहार बस्ती है, और वहाँ आई गेट में चम्मच की फैक्ट्री है, उसी में काम करता हूँ, और घर की समस्या यही है, तो मुझे लगा कि यहाँ जाना चाहिए अपने साथियों का समर्थन करने के लिए, तो हम लोग आ गए। The massive show of support from other workers and the determined display of resistance to the management, despite dire threats, ultimately resulted in the negotiated settlement. During the entire duration of the strike, the workers were cut off from the rest of the world, including their families. The media was not allowed to interact with them. Maruti officials made themselves inaccessible to the media. वजह ये है, जैसे उन्होंने एक चैन बनाई हुई है मारुति सुजुकी वालों ने, वो मीडिया वालों को हमारे तक पहुँच, मीडिया वाले कोशिश पूरी करते हैं हम तक पहुँचने की, बट एक दीवार बना रखी है, उसमें अंदर वो एंट्री करने चाहते हैं, सच्चाई ना पहुँचे, सच्चाई ना पहुँचे। Obviously, the workers had a story to tell, which the management didn't want us to hear. NewsClick finally managed to gain access to the striking workers and got some exclusive footage of the conditions and the mood inside. एक बार मेरी तबीयत ख़राब होने पर मैंने सुपरचार्ज को मैंने बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं 2-1 घंटे के लिए थोड़ा रेस्ट दे दी जाए और मैं फिर अपने काम पे लग जाऊंगा। उन्होंने बोला रेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, ना ही कोई
हेल्प वगैरह मिलेगी। आपको अगर काम करना तभी ऐसी हालत में करो, नहीं तो अपने घर जाओ। किसी बंदे का चोट लग जाती है या डिस्पेंसरी के लिए बोला जाता है नहीं अभी एडजस्ट करो, वो बंदा कितनी देर तक एडजस्ट कर सकता है या बीमार रहता है। अप्रेंटिस को एक शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट 3 में बुला जाता है ताकि इसका मतलब होता है केवल जर्नल शिफ्ट में। किसी को टॉयलेट पेशाब के लिए भी नहीं जाने दिया जाता। अगर कोई कहता है तो उसे कहते हैं आधे घंटे के बाद जाना। आधे घंटे के बाद जाने का क्या मतलब है? जब जिसको आएगा वही तो जाएगा टॉयलेट पेशाब करने। यूँ कहते हैं जिस टाइम टी टाइम होगा उस समय जाना, या लंच टाइम होगा तो उस समय जाना। पेशाब करना तो एक हर किसी का हक है, पानी पीना हर किसी का हक है, इसके लिए कोई किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। होता है उसमें भी कहते हैं कि बाथरूम और टॉयलेट में करो और उसमें चाय पियो। जो यूनियन के बारे में साइन करवा रही है, हालांकि कहते हैं कि मैनेजमेंट और यूनियन का तो कोई इंटरफेयर होता नहीं। यूनियन होती है वर्करों की, यूनियन होती है वर्करों की। उसके बाद भी मैनेजमेंट आ रही है जबरदस्ती बंदों से साइन करवा रही है, कह रहे तुम्हारे परफॉर्मेंस को खराब कर देंगे, तेरी नौकरी छीन लेंगे। इसके बारे में कुछ बंदों ने तो जबरदस्ती साइन करवाए और इसी के कारण से आज यह कूल डाउन हुआ है। साइन हमसे सबसे जबरदस्ती करवाए गए थे, उसमें हमें प्रेशराइज किया गया था कि यदि आप जैसे मैं हूँ तो मेरे को पहले से भी टॉर्चर कर रहे थे। ये बात मैंने अपने असिस्टेंट मैनेजर जो राकेश सर है असेंबली के, उनको भी बताई थी। वो बोले कि तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। मैं बोला नौकरी से निकल दूंगा पर साइन नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। साइन कराना चाहते थे कि आप मुख्य यूनियन से सहमत हो, पर हम उससे सहमत नहीं थे क्योंकि मुख्य यूनियन ने हमारे लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। हम अपने साथी सारे और हम अपनी नई यूनियन बनाना चाहते हैं। तो आपकी नई यूनियन का नाम बताना चाहेंगे क्या है? आपने देखा होगा कि हमारे लड़कों की क्या कंडीशन चल रही है, बीमार चल रहा है, मेडिकल के लिए हमें कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिल रही है। हम जैसे यूनियन पे बैठे हैं और हमारे घर पे ये लोग जबरदस्ती फोन कर रहे हैं कि आपका लड़का बहुत ज़्यादा सीरियसली है। ऑलरेडी मेरी माता हार्ट की पेशेंट है और मेरे परिवार में मैं सब कुछ सहता हूँ। अगर ऐसा कुछ हो जाता है इनकी घटिया चाल तक मेरी माता का इस दौरे को सहन करके ने कि मेरे लड़के की तबीयत ज़्यादा सीरियसली है और मेरी मम्मी हार्ट की पेशेंट है और इस बात को सुनकर यदि उनका हार्ट अटैक अगर फेल हो गया और वो मर गई तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो ये यूनियन जो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ये और अपनी उल्टी चालें चलकर हमारे घर वालों को भी परेशान कर रहे हैं और समस्या में डाल रहे हैं। The ordeal did not end here. 2,500 workers were made to share one toilet. They were barred from accessing facilities like other toilets and water coolers by barricading them from all sides. Food supplies were irregular, with minimal access to healthcare facilities. But none of this dampened their spirits for 13 days. Their struggle paid dividends. The history of demands for workers' own union is decades old. Manesar is the industrial hub of Haryana, a state with the second highest minimum wage after Kerala. But neither are mandatory minimum wages implemented effectively, nor are the working conditions satisfactory. With increasing number of contract workers and casual labor, workers have been aggrieved and concerned about what they consider are management practices which remain unquestioned because of the lack of independent unionization. Workers from various manufacturing plants, especially that of automobiles, have been putting up militant struggles to demand their basic rights, sometimes achieving success, other times not. The Manesar strike is one of the many cases of industrial unrest in the Manesar-Gurgaon belt in the past decade. While the workers claim that the government's intervention would lead to the recognition of their union, the management continues to deny what must be a constitutionally guaranteed right, the right of association. Despite the settlement, there remains a gap in perception between the management and the workers. One can definitely say that though the strike may have ended for now, but the struggle
continues.